people with scleroderma. For people with scleroderma, because it helps manage common symptoms such as joint pain, stiffness, stress, and fatigue. Since many people with scleroderma experience joint and muscle stiffness, low impact activities like walking, cycling, swimming, yoga, and dancing and Pilates are all good choices for activities. However, everyone with scleroderma is different, and so exercise intervention will be very person dependent. Over the course of time, I have observed that the moment we experience any kind of physical or mental discomfort, the first thing that we do is stop exercising. We should always remember that movement in itself is a medicine for us. Exercise is good for patients, but unsupervised exercise or too much exercise too fast can harm their health. It is important that the whole healthcare team works together with the individual to provide a safe, individualized exercise program that will help manage the disease and maximize their quality of life. So today, we have collaborated with a renowned neuro physiotherapist, Dr. Dhwani Kothari Zota. She is the founder of Miran Neuro and Pilates Studio in Mumbai. She is an MSc in neurophysiotherapy from UK. She has also done NDT, which is a super specialty in stroke rehabilitation, PNF, and is a certified clinical Pilates instructor from USA. We are very obliged to have you, Dr. Dhwani, here today with us. Today, she'll be talking about the importance of physiotherapy and exercise with scleroderma. Her aim is to help patients deal with the physical disabilities faced due to their restricted movement and stiffness. Thank you, Dr. Dhwani, for taking out your valuable time for us. Now over to you. Thank you so much, Akanksha, for a wonderful introduction to scleroderma and me. Welcome, everybody. I'm Dr. Dhwani Zota. I'll be starting talking with, firstly, I just want to let you all know if you all have any questions, or can start if it's related to the topic that I'm talking. I would like to, continue with that. So maybe after some time, we can take a different topic if you all have. So I'll just start with, talking about scleroderma firstly. So, okay. So firstly, I want to know that, I want to let you all know what is scleroderma in simple language. So you have your connective tissue, okay? That means the tissues that join together your different cells, okay? So that's a group of cells which join together. जैसे ये skin होती है, okay? इसके बीच में we have connective tissue. Now that tissue starts getting very hard. I'm sure you all have experienced that. And you all experience it only at the level of superficial level. वो आपके body के अंदर भी हो रहा है, okay? The organs are also getting. Now what happens in that case? Your joints are getting, your muscles are getting. In that case, it starts getting more stiffer. So बहुत सारा stiffness हो जाता है. I'm sure कि आपको लग रहा होगा कि सुबह को उठते हैं तभी easy नहीं होता है getting out of the bed, walking, doing your daily activities. So what do we most of the people do when you are in pain? As she said, Akanksha said, just stop exercising. That's the worst thing you can do to your body. Do not stop exercising. Exercise करना please बंद मत कीजिए. Because अगर आप एक्सरसाइज करना बंद करेंगे तो आप हील नहीं हो पाएंगे. हमारा एक मोटो है, हम मेरान में कहते हैं movement heals. So it's very important to move for the movement to heal you. So I'll be taking about 2 topics. Excuse me. I think someone spoke. Yeah. Akanksha, please mute everyone. Yeah. Yeah, I'm continuing. So basically, I'm trying to talk about, first, let's talk about myositis. What is myositis? Myo means muscle. Sitis means inflammation. जैसे muscle का inflammation या सूजन बोल सकते हैं उसको. तो ये बहुत, it's a very rare condition which happens only in scleroderma, one of the typical conditions, जहाँ पे हमारे muscles बहुत stiff हो जाते हैं.
जॉइंट बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है, हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे सपोज मैं एल्बो पूरा यहाँ तक ले जाती हूँ, ये मेरा इधर तक ही हो सकता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? क्या हमें पेन नहीं, मतलब पेन से रहना सीखना चाहिए, या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या स्ट्रेच करना चाहिए? द आंसर इज डू टिल द टाइम यू फील कंफर्टेबल पेन इन द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्टेबल पेन? जैसे स्ट्रेचिंग पेन होता है, तो हम लोग को लगता है वो स्ट्रेच हो गया, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये नहीं, बहुत ज्यादा इम्बेरेबल पेन है, तो हमें स्टॉप करना चाहिए। लेकिन क्या हमें एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए? नो, द आंसर इज नो। नाउ व्हाट कैन फिजियोथेरेपी प्ले अ रोल विद मायोसाइटिस? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेजेस में हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले इसका पेन कम करते हैं। कौन सी चीजों से हम इसका पेन कम कर सकते हैं? फर्स्ट, हॉट या कोल्ड पैक। अगर हमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा टच करने से, अगर हमें लगता है कि इसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन है या बहुत दुख रहा है जैसे हम टच करने से, तो हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड पैक लगाएंगे। लेकिन अगर हमें टच करने से लगता है अच्छा लग रहा है, मसाज जैसी फीलिंग आ रही है, तो हम हॉट पैक लगाएंगे। ये सिर्फ सुपरफिशियल या सिम्टोमेटिक पेन ट्रीट करने के लिए है। सबसे पहली बात, ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसको असेस करेंगे। जैसे हमने देखा कि सपोज अगर हमारा ये नेक पे, मेनली देखा मैंने नेक पे बहुत मायोसाइटिस बहुत सारे पेशेंट्स को आता है, तो नेक पे अगर है तो हम देखेंगे कि शायद अपर बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स वीक है, तो हम उसको ताकत देंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे थोड़ी एक्सरसाइजेस जैसे आप कर सकते हैं। सो वो स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मसल्स कहाँ यूज होते हैं। सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करके फायदा नहीं है, फंक्शनल एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंक्शनल एक्सरसाइज मतलब क्या? जैसे कोई भी पोजीशन में जाके हम करते हैं, सपोज हम जैसे ऑल फोर्स पे आ गए, ऑल फोर्स मतलब जैसे घोड़ा घोड़ा पोजीशन करते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं कि एक हाथ से कोई चीज लिए वापस रखी, तो जैसे उसका हम लोग वही हैंड को इस्तेमाल कर रहे वेट लेने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ सिर्फ पेन फ्री रहने के लिए नहीं बने हैं। हमारे हाथ वजन ले सके, या तो हम ताकत की एक्सरसाइज कर सके, हमें कुछ चीजें उठानी है तो हमें 10 बार सोचने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हमें ये सब फंक्शनल एक्सरसाइजेस करनी है। डे टू डे एक्टिविटीज में हम क्या क्या करते हैं। फिर थर्ड स्टेज है प्रिवेंशन। ये दोनों चीज हो गई, तो प्रिवेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन में आ जाता है बहुत सारी फिटनेस, क्योंकि अगर यही बॉडी का पार्ट अगर हमारा बहुत ही पेनफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ये बॉडी के पार्ट को ट्रीट करें, और ओवर बॉडी, स्पेशली पेशेंट विद स्क्लेरोडर्मा, कनेक्टिव टिश्यू हमारा ऑल ओवर बॉडी बहुत ही ज्यादा टाइट हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होता है, फर्स्टली सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, सेकेंडली हमारा बहुत ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथन होते हैं, स्पेशली एक्सरसाइजेस विद पिलाटेस। हमारा कोर बहुत स्ट्रेंथन होता है। कोर मतलब हमारा मेन बॉडी पार्ट, जहां से हमारा पावर आता है। हम खड़े रहते हैं तो जैसे हमारा लोअर एब्स बोलते हैं, लोअर एब्स दैट इज योर कोर मसल, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि बहुत ताकत बढ़े, पोस्चर बेटर हो, और हम बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं कि प्रिवेंशन में ये करना है। फिर कार्डियो एक्टिविटी करनी, जैसे हम थोड़ा चल पाते हैं अपने रेंज में। जैसे अगर हम बहुत ही ज्यादा ब्रीदिंग हाई हेवी कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उतना वॉक करें कि हम बाजू वाले जो अगर हमारे साथ चल रहे हैं उसके साथ बात कर पाए, उतना होना चाहिए। लेकिन 2 वर्ड से ज्यादा बोलने की ताकत नहीं होनी चाहिए, तो इतना हमें लेजी वॉक नहीं करना है। हमें ऐसा वॉक करना है कि हम बात कर पाए, लेकिन 2 वर्ड से ज्यादा नहीं बात कर पाए, तो उतना तो डेफिनेट चाहिए हमारे हार्ट और लंग्स को, ताकि वो हेल्दी रह सके। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट मायोसाइटिस, हमने बात की है, करेक्ट। अभी सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स। आई एम श्योर कि बहुत सारे जन ने एक्सपीरियंस किया होगा रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम जाता है तो हमारे फिंगर्स फ्रोजन हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और मेक श्योर कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, ताकि एक्सरसाइज से ये सर्कुलेशन बना रहे और वार्मथ बनी रहे। हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अगर बहुत सारा फ्रोजन
आपके उंगली में आ रहा है, तो हम उसको वार्मर्स से या हॉट पैक लगा सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम बहुत लो टेम्परेचर्स में ना जाए। लेकिन हाउ कैन फिजियोथेरेपी हेल्प? फिजियोथेरेपी कैन हेल्प इन डूइंग बेसिक एंड रियली गुड एक्सरसाइजेस। जैसे हम बहुत सारे एक्सरसाइज आपको बताएंगे, तो आप कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी फील करें, और बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, तो सर्कुलेशन से वार्मथ आ जाएगी। सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनॉल्ड्स डिजीज में। अभी हम बात करते हैं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट की, जॉइंट स्टिफनेस की। मायोसाइटिस और जॉइंट स्टिफनेस थोड़ा डिफरेंट है। मायोसाइटिस बहुत ही मस्कुलर है, जॉइंट स्टिफनेस अंदरूनी है। जैसे ये सपोज आपका जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, ये हमारा जॉइंट है ऐसा, और ये है हमारा ऐसे जॉइंट है। तो ये एक कैप्सूल है इसके ऊपर, तो वो बहुत ही फ्रीली मूव करने को हेल्प करता है। लेकिन हम स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है, और ये मूव करने में डिफिकल्टी होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले मतलब क्या? ये इंटर मूवमेंट्स, ये वाली आउटर मूवमेंट्स, जैसे मैं अपना शोल्डर ऊपर कर रही हूँ तो ये आउटर मूवमेंट्स हो गई। ये इंटर मूवमेंट्स कैसे हम उसको बहुत सारा क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें है ना, इसको जैसे ये है, किसी को बोलना है कि इसको हम प्रेस बैक करें, ऐसे ऐसे स्लाइट मूवमेंट्स कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे आप कैसे कर सकते हैं मूवमेंट्स भी, स्लाइट मूवमेंट्स कर सकते हैं। और ये मूवमेंट से बहुत सारा साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, हेल्पिंग यू टू लुब्रिकेट, तो ये हम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। फर्स्टली जॉइंट स्टिफनेस। सेकेंडली जॉइंट स्टिफ और कौन सी चीजों से होता है? जैसे यहाँ से मसल जाता है अंदर तक, तो मसल की एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, ताकत की एक्सरसाइज। इसको हम स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, तो हम बहुत ही बेटर मूवमेंट कर पाएंगे। थर्ड थिंग, जैसे ये जॉइंट है हमारा एकदम टाइट हो गया है, तो एक्सरसाइज नहीं करने से ये हमारा और ज्यादा टाइट होता जाएगा, और फिर बहुत ही डिफिकल्ट है इसको मूव करना। अगर मैं और टाइट कर लूंगी, आप ही देखिए बहुत ही मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एक्सरसाइज नहीं करना इज योर बिगेस्ट मिस्टेक इन स्क्लेरोडर्मा. So please, I really I cannot emphasize this enough that please exercise. Now everyone is telling, आप मुझे बोलेंगे कि आप बोल रहे एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो. How do we know that you're exercising right? मैंने बहुत सारे जन को मैं मिली हूँ विद स्क्लेरोडर्मा. सो सबसे पहली चीज मैंने देखी है कि वो आके बोलते हैं मुझे सिर्फ 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, मुझे स्क्लेरोडर्मा है तो मुझे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है. सो सबसे पहली चीज है कि हर इंसान कोई भी स्टेट में हो, प्लीज एक्सरसाइज. आई अंडरस्टैंड कि आपको नी में तकलीफ है या राइट नी में तकलीफ है. अगर राइट नी में तकलीफ है तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, लेफ्ट नी की, कि हम कर सकते हैं. और राइट नी की भी बहुत ही पेन फ्री जोन में हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई फिजियो या ट्रेनर के पास जाएंगे तो उन्हें बोलो कि मुझे ऐसी एक्सरसाइजेस हो कि मुझे पेन ना हो, लेकिन मुझे ताकत चाहिए. और अगर थोड़ा पेन होता है, और अगर आप लगता है कि वो स्टिफनेस पेन है, तो प्लीज गो ओवर इट एंड डू द एक्सरसाइज. How many minutes and how many times in the week you should be doing exercise? You should be doing exercise 45 minutes a day, at least thrice a week minimum. क्यों? अगर हम 45 minutes का एक्सरसाइज करते हैं, ओके, सो थ्राइस अ वीक, आपकी मसल मेमोरी जो बॉडी को है वो 48 to 72 आवर्स याद रहती है, उसके बाद याद नहीं रहती है, उसका इफेक्ट नहीं रहता है. सो वो बहुत करना जरूरी है कि एटलीस्ट थ्राइस अ वीक आप एक्सरसाइज करो फुल बॉडी की, ताकि बिकॉज अपना बॉडी एक यूनिट है. आप बोलेंगे अरे मुझे शोल्डर ही दुख रहा है, फ्रोजन शोल्डर जैसा लग रहा है, मैं फिजियो के पास गया, 2-3 एक्सरसाइजेस की एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन. नो, आपका अगर शोल्डर का मूवमेंट है, जैसे आप ऊपर कर रहे हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके एक्चुअल स्पाइन मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर मेरा शोल्डर नहीं चल रहा है तो मैं लिटरली मैं ऐसे रोबोट की तरह चल रही हूँ. अब
आप बहुत सारे जन को देखेंगे. सो प्लीज व्हेन यू गो टू फिजियो, उसको पूरा एनालाइज करने दो और देखो कि आप सिर्फ शोल्डर पे काम ना करें. अगर शोल्डर पे प्रॉब्लम है, आपको काम करना है पूरे बॉडी पे, क्योंकि एक पार्ट की वजह से बहुत सारे पार्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजियो टू अंडरस्टैंड कि एक पार्ट अगर नहीं चल रहा है या बहुत ज्यादा स्टिफ है, हम हर एक पार्ट पे काम कर रहे हैं ताकि हम उसको ओपन कर पाए. इनफैक्ट योर अगर हम सब बॉडी पार्ट पे काम कर रहे हैं तो हम इसको हील ज्यादा कर पा रहे हैं. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so joint stiffness के लिए that's main thing. Now exercise. What kind of exercises? I've said that how much we should exercise. 45 minutes thrice a week. और 45 minutes intensity होनी ही चाहिए. आप at the end of the session ऐसा होना चाहिए कि आप और कुछ ना कर पाओ. तो उतना आपको intensity देना ही है. Second thing, कौन से type की exercises? Low impact exercises, ताकि आपके joints और muscles को ज्यादा impact ना हो. Now, what are low impact exercises? The first one is, let's divide into cardiovascular and strengthening. Now, cardiovascular exercises में आप cycling कर सकते हैं, static cycling या normal cycling कर सकते हैं. आप walk कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला. Running is something I would not advise for scleroderma because already the joints are very stiff and they're getting impacted. So I think running is not something I would really advise. But of course a little bit of jogging, a little bit अगर jog करना है तो आप बीच पे जा सकते हैं अगर accessible है तो, ताकि वो soft है मट्टी, तो easy होगा आपको करना. आप ये कर सकते हैं. Third one is आप skipping, running ये सब ना करें तो better है, क्योंकि बहुत high impact हो जाता है. Swimming is excellent. Aquatherapy, swimming is very very good for patients with scleroderma because of course make sure that the temperature is right, क्योंकि अगर ठंड है तो रेनॉल्ड्स का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सो आप ये कर सकते हैं कि स्विमिंग कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी गुड, हेल्प्स यू टू रियली कूल डाउन. बॉडी वेट बेरिंग नहीं होता है तो जॉइंट्स बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, सपल हो जाते हैं. सो बहुत मूवमेंट में आसानियां हो जाती है. Another thing is okay, now let's go to strength training. Now strength training में gym is very very good. You can do that. Gym में make sure you have a trainer, you tell them about your condition or basic exercises. Sorry. So basic exercises, squats कर ली, sorry, lunges कर लिया. These are big muscle exercises, extremely important to move. जैसे हमारे glutes है, quads है. Quads मतलब हमारे thigh muscles, very big muscles. Quadriceps हमारा glutes है, जो बटक muscles बोलते हैं. तो वो बहुत important है क्योंकि चलने में, करने में हमें बहुत ज्यादा importance है ये करने में. So ये हम कर सकते हैं. Second exercise, आप बेसिक अगर आपके पास पिलाटेस एक्सेसिबिलिटी है, जैसे हमारा क्लिनिक बहुत ही पिलाटेस इक्विप्ड है एंड आई एम अ पिलाटेस ट्रेनर माई सेल्फ. व्हाई डू आई रियली लव पिलाटेस? द फर्स्ट थिंग इज इट्स एन इंजरी फ्री एक्सरसाइज. आपको ये एक्सरसाइज में इंजरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम अगर पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा है तो सोते हुए भी हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसमें. जैसे रिफॉर्मर पे, पिलाटेस रिफॉर्मर है, हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि उनको सोते हुए थोड़े एक्सरसाइज कर ली. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलाटेस एंड जनरल एक्सरसाइजेस? पिलाटेस टारगेट्स द स्मॉल मसल्स. स्मॉल मसल्स मतलब स्पाइन मसल्स होते हैं, वो स्मॉल मसल्स होते हैं. जैसे बहुत सारे हमारे कोर मसल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल मसल्स. तो वो जो डीप मसल्स होते हैं, जो फाउंडेशन है बेसिकली, आप जो अगर सपोज आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइट एकदम एब्सोल्यूट स्ट्रांग हो तो हम अच्छी बिल्डिंग बना पाएंगे. वो बिल्डिंग को ब्यूटिफाई करो, अच्छा करो, कलर करो, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो इट्स गोइंग टू फॉल डाउन. एग्जैक्टली व्हाट पिलाटेस डज. कोर मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं. इट्स अ वेरी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज. हम स्प्रिंग्स यूज करते हैं ताकि कंट्रोल भी आए और हमें स्ट्रेंथनिंग भी मिल सकती है. सो पिलाटेस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. अगर आपको एक्सेसिबिलिटी है, प्लीज गो एंड डू पिलाटेस फॉर योर these things for your condition, because it's an excellent form and injury free, no problem at all. Another thing, अभी हम बात करते हैं कि so pilates you can do.
अगर आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है जिम या पिलाटेस से, सो हम बेसिक थेराबैंड एक्सरसाइजेस, वो जो मैं दिखाने वाली हूँ अभी, थोड़े थेराबैंड एक्सरसाइजेस, छोटे डंबल्स ले लिए और हमने घर पे एक्सरसाइज कर ली। लेकिन घर पे एक्सरसाइज करने से एक ही प्रॉब्लम है कि हम कभी लेजी हो जाते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं होती है। सो अगर आपके घर पे भी कोई फिजियो आ रहा है तो उसको बोलो मुझे 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। अगर मुझे पेन हो रहा है, मुझे नी में पेन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप सिट डाउन एंड यू कैन डू arm exercises very well, absolutely fine. Okay, so that now I'm coming to and I have covered the what kind of exercises we can do. Now the main thing I want to talk about is balance training. अगर आपका कोई भी जॉइंट स्टिफ है, पेनफुल है, सपोज राइट नी पेनफुल है, तो वेरी 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 ऑब्वियसली मैं लेफ्ट साइड पे ज्यादा वेट लेना चालू कर दूंगी. So balance training in scleroderma is extremely important. हमने बहुत सारे पेशेंट देखे जैसे बैलेंस बहुत ही ज्यादा लूज करते हैं. आप भी अगर याद करोगे तो यस, व्हेन आई एम गेटिंग अप फ्रॉम माय बेड टू वॉकिंग, मेरा बैलेंस नहीं रहता है. सो यू नो दैट्स वन थिंग. सो हम बैलेंस के लिए भी थोड़े एक्सरसाइज करेंगे. और बैलेंस क्यों होता है अफेक्ट? बिकॉज जैसे हमारी बैलेंस की 3 सिस्टम्स होती है बॉडी में जो बैलेंस कंट्रोल करता है. फर्स्ट है हमारा लिटरली ब्रेन, ओके, मिड ब्रेन. सेकेंड वाला ब्रेन से जाता है हमारे मसल्स तक, बेसिकली दैट होल सिस्टम. सेकेंड वाला ईयर के बीच में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है. और थर्ड है अपना आईज, आईज जो देखते हैं हम लोग. सो ये जो ब्रेन का सिस्टम है मसल्स तक जाता है, वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होता है स्क्लेरोडर्मा में. सो हमें मेक श्योर करना है कि हम एक्सरसाइज की मदद से बैलेंस को भी हम बेटर करें, ताकि हम बैलेंस लूज ना कर पाए एंड द रिस्क ऑफ फॉल रिड्यूसेस अ लॉट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर गिर गए तो बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. ओके, now I'm going to talk about the last one before we start showing you exercises, lung issues. Because organs are made of connective tissue और वही hard होता जाता है, तो heart and lung are very very affected. So breathing, shallow breathing हम करने लगते हैं, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, फिर उसका प्रॉब्लम. तो ये हम एक्सरसाइज फॉर्म में, जैसे हम सपोज एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे, ओके, इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, सो आई टेल देम ब्रीदिंग इन, breathing out. So incorporate breathing exercises for the lung and heart issues in your normal daily routine. Very 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 important. So that's how we can make sure कि हम symptomatically at least हम make sure करें that हम lung issues को combat कर रहे हैं. Because all these things, लंग इश्यूज, ये जॉइंट स्टिफनेस, मायोसाइटिस, ये सब चीजें हम एक ही सेशन में वो 45 मिनट्स डेफिनेटली, एंड बैलेंस ऑल्सो, ये 45 मिनट्स में हम कवर कर सकते हैं. आप अपना सेशन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग. गेट ट्रेनिंग मतलब हम चलने की प्रैक्टिस या स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन ये कर सकते हैं. और द लास्ट वन इज मसल कंट्रोल या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन जनरल. सो हम 4 पार्ट्स में अगर सेशन को डिवाइड करें 45 मिनट्स आराम से हम कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर डूइंग एन इंटेंस एक्सरसाइज टू रियली मेक अ डिफरेंस, because if it doesn't make a difference, you're really not making a change. So remember that very well. Okay, now I'm going to be showing you 2 arm exercises, 2 leg exercises, 2 balance exercises, and 2 gait training exercises, so you understand what I'm really trying to tell. Okay, chalo, I'll be just shifting this side. Okay, just a minute. Dhwani, can you just show them the reformer as well so they understand when you talk about Pilates? Yes, I think I'll just shift this there directly. Yeah. So I will show you all exercises on that itself. Wait, I'll just stop the video for 1 minute, just shifting it there. Okay. Sure. Yeah.
Are we good? Yes. Yeah. So that is a reformer, in case you can just see. That's a tower of the reformer. And this is the bed I've made right now because I want to show you all exercises. Okay. That's cool. Yes. Yes, Dr. Dhani. Yes. So since it's written movement heals, we really believe in it. And I really feel that moving in the right manner will always help you to move better, because we are humans, we are not plants. We are meant to move nicely and pain-free, and that's our right. And I wish that everybody today walks out saying that I am going to exercise, I am going to feel better, because eventually you're going to feel better with exercising, and that's going to become an addiction. You're not going to be getting out of it. It's going to become I need to exercise, and that's very important. Okay, so let's start with some breathing exercises. I'm sure you all have had a lot of breathing exercises and things like that. Just a minute, I'll just get my TheraBand. Yes. Okay, so we're going to start with breathing exercises. Now, how do we breathe and how do we know that we are breathing the right way? Okay, if you all have a TheraBand, just take this TheraBand here. Okay, take it round onto your chest. Okay, now loosely, I'm just going to be here, loosely just hold it here. You can hold it in the cross manner like that. Okay, now make sure you do this in front of the mirror. It's the easiest, so that you can look at yourself and you know what mistakes are you making. Most of the exercise start with doing it in front of the mirror, so you see your posture and form and you know you're not making any mistakes. Okay, most of the time. Now I'm going to show you two exercises. The first one is TheraBand, loose holding, and you're going to breathe in through your nose, but make sure you're not going to lift your shoulders. That's most of the time, because these are your accessory muscles of the breathing. So you're using more muscles and more energy into normal deep breathing also. So you know that. So let's start with doing this. Okay, here you're going to breathe in. When you breathe in, what's going to happen? This is going to go inside, because you are going to inflate the TheraBand. You have to tell yourself that my chest is like a balloon and I'm going to inflate it from all the ends. Breathe out through your mouth slowly and gradually. I'm not doing this. No. If you think you're doing really well, tighten this. So it becomes a resistance exercises. Remember, whenever you do any exercise, after 6 weeks, you will hit a plateau. Like if you're taking a 1 kg weight and doing squats every alternate days, 5 or 10 squats, your body is getting accustomed to it in 3 to 6 weeks. After that, it won't matter. It will not bring a change. It can maintain you for sure, but it's not going to change the way you feel or you do. The reason being that the body gets accustomed to a certain exercise. वो बहुत used to हो जाता है. So हमें change करना बहुत जरूरी है exercise. अगर हम अलग अलग exercise forms अगर कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा body के लिए अच्छा है. क्योंकि अगर कुछ नया कर रहे हैं तो हमारा फोकस भी बेटर हो रहा है और नए मसल्स को हम लोग स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, now this is the first exercise I showed of breathing. Now many times we've heard that with scleroderma they say my right side muscle, my right side lung is a little more affected than the left side. So I have a very good thing for that. Okay, so let's work it on the my left side. Okay, ये TheraBand है, इसको मैंने पैर के नीचे लगा दिया है. ओके, नाउ दिस इज वेयर आई एम. ओके, मेरा हाथ इधर है. ओके, आई जस्ट टेक दिस डाउन. यस, ओके, ये है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो.
You can do this on both the sides. Complete it on both the sides. Okay, so you can do that on both the sides. That works really well. Yes. Okay, so that really works very well. That's 2 breathing exercises. अब मैं दिखाना चाहती हूँ 2 arm exercises. हम क्या कर सकते हैं hand के लिए. Okay, I just get my dumbbells. Yeah. All right. So just care 1 kg dumbbell should be really enough. Let's start with a little bit of what I've seen, like posture wise, that that doesn't work well with most of the patients. Take these dumbbells here, okay? And now make sure the shoulders are not like this. You're sitting straight. How would you know you're sitting straight? Make sure that this ear and this shoulder is in one line. My ear and my shoulder are in one line. Okay, if they're not, suppose you are like that, make sure you actually straighten up. Okay, that will really help you. Now, we're going to take this and we're just going to take this behind. We're not really doing this, okay? It's a 90 and 90, okay? See me. We're at 90 degrees. And now we're just taking this behind. It'll help to activate your upper back muscles. Extremely important upper back. कुछ भी काम करने के लिए अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है तो अपर बैक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो वी आर गोइंग 1 and relax, 2, relax. Okay, that's your first. Second exercise, let's do a more generic exercise. क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको ये करेंगे. 1, ब्रीद इन कर लिया क्योंकि मैंने ये चेस्ट को एक्सपैंड किया है. ब्रीद आउट कर लिया, चेस्ट को बंद कर दिया है. Okay, you can do this 10 to 15 times and it's a fabulous exercise. Chest को expand और ये करने के लिए. Okay, so that's your 2 arm exercises. Now I will show you all core exercises. Extremely important. Okay, just going to adjust this. All right. So I'm going to show you core exercises. I'm going to be lying down. 2 exercises I'm going to show, extremely simple, that you can start just activating your core. Okay. Let's lie down. All right. Now the first exercise is going to be a tabletop exercise. This is 90. This is 90. And my ankle is at 90. I'm just going to say 1. Breathing out, 2, 3, 4, 5. इसमें क्या होता है, most of the time जो ये leg है, left leg है मेरा, right मेरा hip ऊपर आ जाएगा. So make sure you're pressing into the mat. बहुत ज्यादा नहीं. हमें कैसा पता चलेगा कि हम ज्यादा press नहीं कर रहे हैं? This hand should be able to go down the back, but बाहर नहीं आना चाहिए. Okay? So you're here. 1, 2, 3, 4, and 5. Same thing with the right leg. Now, second exercise. Sorry. Second exercise for the core. एक ले लिया हमने, फिर हमने ये कर दिया. 1, 2, 3. Okay. So ये core with leg exercise हम कर सकते हैं. So हमारा पूरा exercise protocol हो सकता है. Yes. Okay. Now I'm going to be showing you 2 exercises for the leg. बरोबर आहे. 1000 रुपये में મને અંદર પપ્પાને મોંઘા ચડાય અને પપ્પા વચાડે કે મન થઈ. Can you please mute? That's not okay. Yeah, please.
So now two exercises. The first one is bridging. It's a buttock exercise, extremely important to do. Okay. We are lying down, arms by your side. Breathing in to prepare. Breathing out through your mouth. Buttocks को tight करना है और ऊपर लेके आना है. I know बहुत सारे जन ये करते हैं, पर मैंने common mistake देखी, सब बोलते कमर ऊपर लो, कमर ऊपर लो. हमें कमर ऊपर नहीं लेनी है, कमर ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन बटक्स को टाइट करना जरूरी है. Exercise doing right way is very important. Tight and down slowly. वापस करेंगे. Tight and down slowly. This is very important. Will help you to start walking better, tighten your buttocks, and also feeling more stronger. Okay. Now the second exercise for the leg. मैं दिखा रही हूँ. Okay. We have to go on side. All right. Side line पे जाएंगे. ये हम straight कर देंगे. Okay. Leg. इसको हमें ऊपर लेना है. लेकिन ये ना इधर आएगा ना इधर. Okay. ये shoulder और हमारा hip should be parallel to the mat. Okay. And ये जो हमारा hip है एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए. ये पीछे जाएगा तो कोई फायदा नहीं है. कोर को टाइट करना है. जैसे हमें सांस अंदर नहीं लेनी है, हम सांस बंद भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसको टाइट करना है. ओके. और यहाँ पे हम हाथ सपोर्ट के लिए रख सकते हैं. 1 2 पूरा नीचे नहीं लाना है. 3 यस. जैसे हम 10 से 15 कर सकते हैं. वेरी गुड फॉर योर दीज मसल्स. ओके. सो आई हैव कवर्ड 2 कोर, जिसमें काफी लेग भी आ गया है, क्वाड्रिसेप्स. सेकेंड आई हैव कवर्ड glute muscles, very important walking करने के लिए. Last 2 I'm going to cover is for balance training. Now balance training is very interesting. हमें देखना चाहिए कि हम कौन से लेवल पे हैं. हम 1 leg stand कर सकते हैं या नहीं. So we're going to start doing that. Okay. 2 basic exercises. I think my leg can be seen, that's fine. Okay. Let's start with just basic marching. 1 2 3 4. ओके. अगर आपको लग रहा है आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो मेक श्योर आप एक चेयर को पकड़ रहे या कोई आपके साथ है ताकि आप कर पाए. ओके. सेकंड वन यू कैन डू इज जस्ट होल्डिंग ऑन योर 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स तो होने ही चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you can try doing all these exercises and I think you can make a very good workout with these exercises itself and understand. I think I've given you all a very good schedule. Start with strength training, a little balance training, little bit of strength में भी divide कर सकते कि आज मुझे arms करना है या आज मुझे legs करना है. Functional exercises कर सकते हैं. Functional exercises में हमारा all fours आ सकता है position, या तो हम सिर्फ बैठे हुए थोड़े rotations कर सकते हैं स्पाइन के लिए. सो ये हम कर सकते हैं. सो बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट रखना, ट्रेनर रखना, ताकि उनको आपके बारे में पता है. बिकॉज समटाइम्स सुपरविजन, गुड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो रॉन्ग हो गई तो इंजरी के होने बहुत चांसेस हो सकते हैं. ओके. सो आई थिंक एवरीबडी शुड मूव, एवरीबडी शुड have an exercise program for themselves. And as I say, and at Miran we say, movement really heals. I'm wishing you a lot of healing. So I think we end the session and I'm ready for some questions. Yeah, so I will ask the first question here, Dhwani. Tell me. A lot of our patients have, their claws are like either they are a little crooked, वो हाथ के digits are crooked, right? वो हाथ के भी हो सकते हैं, पैर के भी हो सकते हैं. And उनको फिर day to day activities में दिक्कत आती है. Even like I would say as simple as hooking a bra becomes a challenge for them, right? So what do you suggest such patients should do? उनके लिए क्या exercise है कि उनके digits थोड़े से loose हो जाए? Correct. So I would suggest that, there are these really amazing clays and things like that available. You should, my first thing is don't stop doing anything. That's the first thing. हमें stop नहीं करना चाहिए कि we're not doing any exercise or any activity. अगर हमारे movements थोड़े restrict हो गए हैं तो हम make sure कि जितना movement है at least उतना movement हम करते रहे. Lots of जैसे आटा होता है, थेरापुट्टीज होते हैं,
तो थोड़े एक्सरसाइजेस हम उसके ग्रिप के कर सकते हैं, शोल्डर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रिप खराब हो गई तो ऑटोमेटिकली शोल्डर बहुत ही खराब होने लगा है. सो वी डोंट वांट, सबसे पहले तो प्रिवेंट करो कि दूसरा कुछ खराब हो जाए. सेकेंड थिंग, जितना है, जितनी मूवमेंट है उतना एटलीस्ट हमें वो मूव करना ही चाहिए, ताकि और प्रोग्रेशन इतना जल्दी ना हो पाए, बिकॉज एक्सरसाइज कैन रियली स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ एनी कंडीशन. सो आई थिंक जितना है उतना बेटर होना चाहिए. Also, if there is we have a lot of occupational therapists, I think they can really help you all with, you know, modifying your movements and having a lot of other aids for day-to-day activities. So that is a very fabulous thing that Otis really have. So I think really going to them and telling them that, that's really going to really help. Thank you. Welcome. Questions, anyone? I have a related question to what you just asked about clawed toes. You explained about clawed hands, but would the same apply for toes? My sister has Parkinson's, and she has clawed toes in the right foot, which are very painful. Now she does gymming, she does dance, she does everything for general exercises, but nobody has helped her with the clawed toes. So Okay, so in Parkinson's, clawed toes is due to rigidity and imbalance. Okay, it's something called as postural instability. So that's definitely something very different. It requires a lot of other kind of treatment, because she has a tonal issue, right? With Parkinson's, there's a lot of rigidity. That means the tone in the muscles are extremely stiff. So that's something very different protocol to you know, in Scleroderma we have these things. Yes, balance training and clawed toes can be corrected with good neurophysiotherapy treatment for sure. okay, so should I advise her to go to a physiotherapist? Immediately, yes, because if she's dancing and everything with clawed toes, she's at a risk of fall. So that's really important that she should definitely visit a neurophysio to correct that. Sorry, so that she can move about more freely and she's not at a risk of a fall. Okay, thank you so much. Welcome. I have a question. After how many hours of having food should the exercises be done? Very good question. I think you should not be very heavy, or you should not be empty stomach. If it is in the middle of the day, if you've had your lunch is always a little more heavier. So I think probably a 1.5 hour you can start exercising. Or if it's in the morning, have a little you know, like a lighter breakfast, like you had an oatmeal or just had a fruit, you can definitely do it. Also, it really matters if you're a diabetic, if you are not diabetic, a lot of things really matter, so that, you know, you can figure that and then probably exercise. Should not be a problem. Okay, I have another question. What grade of TheraBand does one start with? Okay, so so there are lots of brands on Amazon that you have, and none of the it's not something that red is the lowest, or somewhere in some cases blue is the lowest or green is the lowest. What I really like this blue one from Decathlon. It's really sturdy, and it's very good quality, and it's pretty long also. So this is something that we use in the clinic, and it's from Decathlon, and it's fabulous. You can use it for leg, arms, everything, because sometimes the shorter bands you are not able to use. These are very good ones. So I really like them. So you can suggest this. The blue one is pretty good. It's not very light. It's not very heavy. It's perfect, I think. We have any other question? Yeah, okay. So, Dr. Dhuali, coming back to ulcers, right? Yes. A lot of our patients develop ulcers, again, due to which they stop exercising, because ulcers obviously are very, very painful. Perfect. So, I want you to give an insight. How does exercise help in healing ulcers? So the first thing is, now what is ulcers, right? Like, it's basically inflammation, and there is an infection that is caused there. Now, how will that really help?
and how will you help them in a more symptomatic way? You're taking your medication, you're doing everything. Now, ulcers can really be very painful, but exercising will help to circulate the blood and also help in removing the lactic acid and all the toxins that are there and flush it out of the body. So exercises in general is going to help so that you're breathing better. Oxygen is more to the body. It's really going to help. In fact, so many people, because of ulcers, do a lot of oxygen, O2 therapy and everything. Let's do it from inside. That's going to help you way better than actually doing from outside. In any case, do not stop exercising, because it's the best form of free medication to your body, I can say. It's going to always help you. There is no side effect to exercise except unless it's causing pain. But there's always a modified exercise for everyone. If you have an ulcer in the right leg, please work out your left in lying down. Just do that. You don't have to be on your feet. Do that. Make sure you're doing breathing exercises. Excellent. It's going to start helping you to, get those oxygen into the body and going to help you to, move and have a better day. So there is no excuse to not exercise always. I've had questions. Ma'am, I have started losing lots of muscle mass on shoulder area. How to strengthen the shoulder? I think we just mentioned I do not strengthen the shoulder separately. You will start losing muscle mass actually all over the body, but you're just realizing on your shoulder because you started getting weak. There is no how to, I've shown you a few exercises. Once the upper back is going to be very important. You start working out on that, and please make sure you're working out the entire body. Once your shoulder loses some muscle, the spine is getting affected, your low back is getting affected, and then eventually your walking style also is getting affected. So please do not think of your body as one joint or two joints, something like that. Please don't. You have to work out your entire body, no matter where you have pain or no matter what muscle you're targeting. There is no, people say that, I want to lose from my hips. It does not happen like that. You are going to lose overall. You need to strengthen your body overall. Look at a more bigger picture. Your body is as a unit. Even when you're walking, it's not just your legs working. Your shoulders are also taking all the weight and helping you to move better. You're walking in that way. There's coordination happening. There's so much happening. The body works as a unit, not as a separate, it's not a combination of 15 joints. 15 joints together make a body. So if one joint is affected, the other is going to be affected. So yes, strengthen your shoulders, focus on that, but don't forget your lower body. Okay. There are 2 more questions in the chat. Okay. Yes, I couldn't see that. Yes, I saw that. Are TheraBands the same as the resistance band? Yes, they are the same. Resistance band and TheraBands are the same. You can look into it, I think, with Amazon or something, and they're going to be good. I don't like this thin resistant bands. I like these big ones, so you can use them and they stretch pretty nicely. So that's what I really like. Okay. Also, with the problem of acid reflux, will there be any problem with leg exercises you suggested? No, there should not be any problem. If you think there's a problem with your acid reflux, you can put like a pillow or something like that and get yourself a little up, and then probably do the same exercise. It should not be a problem. You can take a wedge or something like a wedge pillow or something, and then I think there should not be a problem of exercising. Yeah. Any other questions? Anybody wants to ask anything? Okay. I guess Akanksha, you can take over. Yeah, sure. Thank you, Dr. Dhwani, for sharing your valuable inputs with us today. I think, do we have one more question? One second. Okay, thank you. Sorry. Yeah. So thank you, Dr. Dhwani, for sharing your valuable inputs with us today and for guiding us in the right direction towards a better and healthy lifestyle. I'm sure each one of us will benefit from your guidance and start exercising on a regular basis for at least 45 minutes thrice a week. Hope so. We look forward to collaborating with you more often in future.
I would also like to thank Scleroderma India for organizing this session and all the patients and caregivers for taking out the time and attending it. Thank you, Dr. Dhwani, and wish you a very good weekend. Thank you so much. It was really lovely talking to all of you. I hope I've made a difference to everybody, and I hope everybody heals. And just wishing you all a very good weekend and life. I really want you all to be stronger and fight this in a more positive and a stronger way. Thank you. Thank you. Thank Dr. you. Dhwani. So much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.